हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल घूमने चलो में। अभी हम लोग हैं श्रीलंका ट्रिप पर और आज हमारा है 9वां दिन, 9th डे इन श्रीलंका। आज सुबह हम लोग सबसे पहले गए टर्टल हैचरी। वहाँ पर बहुत सारे टर्टल्स देखे जिनका की ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने पर इन टर्टल्स को ओशन में रिलीज कर देते हैं। उसके बाद दूसरे सी एनिमल्स जैसे शार्क, स्टारफिश, स्टिंगरे भी देखे। वहाँ से निकलकर हम लोग गए माधुगंगा रिवर सफारी के लिए। वहाँ हमने सिनेमन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस देखा। उसके बाद हमने फिश स्पा के लिए ट्राई किया, जो कि हमसे हो नहीं पाया। अब हमें भूख लग रही है और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स जो है वो यहाँ पर क्लोज्ड हैं, क्योंकि श्रीलंका में न्यू ईयर सेलिब्रेशन टाइम है। हमारे ड्राइवर ने भी बहुत जगह कॉल करके फाइनली एक जगह खोज निकाला है जहाँ हमें वेज खाना मिल जाएगा। और ये हम आ गए हैं बीच क्लब रेस्टोरेंट। खाने का ऑर्डर हमने दे दिया है और अभी कुछ आधे घंटे का समय लगेगा। तब तक चलते हैं और बीच घूम कर आते हैं। एंड लुक एट द व्यू, ऑसम। पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है। बारिश कभी भी आ सकती है और ये लहरें भी अभी बहुत तेज हैं। जब तक हमारा खाना आता है तब तक हम लोग थोड़ी देर बीच पर मस्ती करते हैं। अब हमारा खाना भी रेडी हो गया है, सो लेट्स गो एंड एंजॉय द फूड। ये है वेज नूडल्स, जिसको हम लोग शायद सेमिया बोलते हैं हमारे यहाँ, वर्मिसेली, वेज वर्मिसेली, लेकिन यहाँ इसको वेज नूडल्स बोलते हैं। और ये है वेज बिरयानी। अपने भोजन का आरंभ करें। हमारा लंच तो कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ से चलने का भी टाइम हो गया है, लेकिन अभी बारिश नहीं आई है, तो एक बार फिर से बीच घूम कर आते हैं। वो जो आइलैंड है वहाँ पर एक मंदिर है। सुनामी के टाइम में वो उस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि यहाँ पे श्रीलंका में किनारे किनारे जितने भी टेम्पल्स थे, घर थे, बिल्डिंग्स थे, वो सारे डैमेज हो गए थे। ये पूरा गांव खत्म हो गया था। इस घर के सारे लोग मारे गए थे। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये है सुनामी म्यूजियम। 2004 में श्रीलंका में एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हुआ था, 26 दिसंबर 2004 को। यहाँ पे बहुत हाई वेव्स आए थे, जिसको सुनामी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत डिवेस्टेशन हुआ था। ही वॉज पार्ट ऑफ दैट। आप यू हैव सीन इट राइट, दैट सुनामी। कैन यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट दिस? I see that 2004 December 26 in the 9:26 in the morning came first wave here, but I don't understand tsunami. That because that 2004 tsunami first time in Sri Lanka, I don't understand tsunami. I am a fisherman because tsunami. I am a fisherman. I think that time that Indian Ocean water came in the land. We are going to the mountain area. My family and me, everybody went to the mountain area. Yeah, but first wave came. After 30 minutes later, came that water go back in the ocean. Yeah, that time somebody go there looking. About 300 meters is there, no water. Ocean is a go back. Because the Sri Lankan people don't understand tsunami. We don't know what happened. We go there looking. After 30 minutes later, came another one, big one, about 10 meters higher, 800
kilometer per hour speed, like an aeroplane. That second wave came here, every houses, big building, school, everything gone with that train. That train accidents are here. There are so many people dead in the train. That days after Christmas, Sunday and full moon day. Sri Lanka, everybody people holiday. Many people travel. That 8 carriages in the train, about 2,500 people in the train. But 1,270 people died only in the train. That first wave came, that train stopped. That time, nothing happened, that train only stopped. That boat, the first wave water go back, that time somebody's get down, run inside. But somebody's stay in the train. He's thinking safety in the train, we are stay in the train, because he don't know, came another one. That second wave came, go on that train with people. My village people, somebody's after first wave, somebody's thinking safety in the train, we are getting in the train. About 249 people dead, my village people in the train. About 1,700 dead bodies, only this village, that Paralia. This village, name of Paralia, about 1,700 dead bodies. About 200 people never found, missing. Never found. Many babies, many children and old people. My sister have 2 children, 11 years old girl and 5 years old boy. First wave came, never found. 99% of the Paralia population was killed. A part of the train wreck was displayed at the Community Tsunami Museum opened in Paralia. Where are you from? We are from India. India. Which part in India? Bangalore. Bangalore. Yes. So this is cinnamon, trees, cinnamon. Yeah. Oh, this is cinnamon. Cinnamon, yes. Okay. So we take the cinnamon stick from the bark and the leaf we make cinnamon oil. You know, tiger balm. Yes. We use a lot of cinnamon oil to make that painkiller. जी तो हम लोग बारिश का आनंद लेते हुए आए हैं यहाँ पर जेम स्टोन, कौन सा मून स्टोन का यहाँ माइनिंग हो रहा है तो Right, so this is natural moonstone mine. You can find here 2 colors of moonstone, white and blue. Right, moonstone only in this area you can find in the world, blue color. okay. White moonstone, different parts in world you can find. This mine is 18 meters deep, but unfortunately today is not working day. You know, yesterday festival Holiday, day. yes, festival. So today is not much people came to work. There is something, you know, right? Pressure and semi-pressure. Sapphire, ruby, diamonds, emeralds, all precious. But this one is semi-pressure. So this is all the old clay we collect from the mine. Then evening they wash all together. On oil here, 200 kilograms of leaf, 1 liter oil, 6 hours process. Okay. From the leaf we make oil. And the bark, cinnamon sticks, see? I think you use this one for biryanis, huh? Tea, coffee, very, very special. Little bit sometimes we use. for But this one is very, very good, healthy spice. Powders and incense sticks. Nice smell. You can burn one in the morning, one in the evening. Very nice smell to the house. Oil, headache, toothache, joint paining, and massage. So if you like to buy fresh, we can buy here. अभी हमने इनका दालचीनी का गार्डन और उससे बने हुए उनके प्रोडक्ट्स देखे जिसमें उन्होंने दालचीनी से अगरबत्ती, तेल
और मसाले ये सब बनाए हुए थे। और अब हम आए हैं इनके स्टोन्स के फैक्ट्री में। यहाँ पर इन्होंने रॉ मून स्टोन्स और अलग अलग वैरायटी के स्टोन्स रखे हुए हैं जिसको कि क्राफ्ट करके ये ज्वेलरी बनाते हैं। इंडिया के कंपैरिजन में इन ज्वेलरीज के प्राइस काफ़ी हाई थे। Melting process before make the jewelry. Right, now I will show you the finished products in the showroom. So excuse me sir, you're not allowed. हमारी आज की आइटनरी में जितने भी प्लेसेस थे उन सभी जगहों को हमने घूम लिया, सभी जगहों पर गए। और अब काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है अभी, सो अब हम लोग सीधे जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट। पूरे शाम आज बहुत तेज़ बारिश हुई है। अभी हम लोग अपने रूम से निकले हैं और आए हैं डिनर के लिए। और डिनर में है राइस, चपाती, ये है पम्पकिन, देन वी हैव कैबेज, बीटरूट, पोटैटो, रिच गॉड, दाल, साथ में है पापड़, पिकल, सैलेड। सो बहुत सारे आइटम्स हैं आज हमारे लिए यहाँ वेज में। थोड़ा थोड़ा करके हमारा प्लेट पूरा फुल हो गया है। सो अब डिनर करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बी सेफ, जय श्री राम।